welcome back to my channel Osteopathy Clinic. I know, hope everybody is doing well. And like आज मेरे क्लिनिक में आए हुए हैं मिसेस ममता. ये इनका थर्ड सेशन है. तो पहले से तो बेटर है, बट थोड़ा सा उनका वेट है, इस वजह से थोड़ा बहुत पेन रह गया है. तो हम लोग ये थर्ड सेशन करते हैं, पूरा कैरोप्रैक्टिक सेशन ऑफ हर बायलैटरल नी जॉइंट प्लस फुल अदर जॉइंट्स का भी करेंगे. तो स्टे ट्यून, देखते रहिए. चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है. रिलैक्स, आप टाइट मत करिए, जस्ट रिलैक्स छोड़िए ममता जी. हाँ, ये हाथ यहाँ रखिए. देखिए थोड़ा सा आपका राइट पहले से तो काफी बेटर है. थोड़ा सा हल्का. हाँ, रुक नहीं रहा. नहीं रुक नहीं रहा. हाँ, ओके. कमर में दर्द है क्या? नहीं, नहीं आज तो ये हाथ रुका रहता है. यहाँ पे, यहाँ इस तरफ, यहाँ पे दर्द है. बाकी ये नहीं, बाएं तरफ नहीं है और बीच में भी नहीं है. नहीं. वेरी गुड. फिर से एक बार चेक कर रहे हैं. थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा. ओके. तो आप जो है पहले ना, आप ये दाएं तरफ बाएं तरफ के ऊपर आप लेट जाइए, टर्न कर लीजिए. हाँ हाँ हाँ, ठीक है. हाथ को क्रॉस कीजिए, हाथ को ऐसे क्रॉस कर लीजिए इस तरफ. और ये पैर सीधा कर लीजिए. ये इस पैर को एक पैर. हाँ, सीधा रखिए. हेड को इस तरफ कीजिए, इस तरफ अपोजिट तरफ. हाँ, अभी ना बात मत कीजिए. हाँ, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. इस तरफ घूम जाइए, हाथ को क्रॉस कीजिए. हाँ, इस पैर को सीधा रखिए, इस पैर को स्ट्रेट रखिए, इस पैर को स्ट्रेट रखिए. इसको ऐसे रखिए. आप थोड़ा सा और घूम जाइए, थोड़ा सा और घूमिए सामने तरफ. हाँ, इस पैर को सीधा रखिए. हाँ, इसको स्ट्रेट. ओके, ठीक है. ब्रीथ इन, उस तरफ देखिए, हेड अपोजिट तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ. ममता जी इस तरफ देखिए. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन. ये आपका नंबर को एडजस्ट कर रहे हैं. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. रिलैक्स. सीधा हो जाइए, सीधा सीधा, स्ट्रेट स्ट्रेट. हाँ, हेड को ना यहाँ रखिए, ऊपर आ जाइए, थोड़ा सा ऊपर आ जाइए. हाँ, पास. ठीक है, सीधा रखिए. लंबी सांस लीजिए. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. लंबी सांस लीजिए. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. अब ये आपका नी जॉइंट के लिए हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. एक बार और. लंबी सांस लीजिए. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट,
breathe in, breathe out. Relax. Any discomfort, let me know, huh? अब घुटने मोड़िए, तो घुटने मोड़िए, सीधा कीजिए, फिर से। ओके, घुटने मोड़ लीजिए। हाँ, ये आपका थोड़ा जॉइंट को मोबिलाइज कर रहे हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. इधर पैटलॉक आपको मोबिलाइज करके दे रहे हैं हम। ये आप भी ऐसे ना आप कर सकते हैं घर पे। अच्छा। खुद सीधा लेट के पैटलॉक को पकड़ के इसको मोबिलाइज करेंगे ऊपर नीचे। हाँ, और राइट लेफ्ट, और उसको गोल गोल भी घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्योंकि ये स्टिफ हो जाता है आपको। वैसे पैटलॉक में आर्थराइटिस भी है, पैटलॉक के ऊपर भी ना एक्सरे में पूरा दिख रहा है। सो ये करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज के बाद, जैसे नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के बाद जो प्रोटोकॉल है, उसके बाद आपको ये पैटलर मोबिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। अच्छा। स्ट्रेंथनिंग तो अभी वेट कब देके शुरू किए आप? हाँ? वेट कब लगा के 1 किलो हाँ। इनिशियली? अच्छा, अब आपका हम हिप जॉइंट करेंगे। हाथ रखिए, हाँ, आराम से। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, relax. ये अभी आपका थोरासिक मोबिलाइजेशन करेंगे, ठीक है? थोरासिक के लिए लंबी सांस लीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हुआ? ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out. Okay. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. ये आपका पैरास्पाइनल मसल्स जो है, ये थोड़ा सा ये स्टिफ है, तो इसको थोड़ा रिलीज कर दे रहे हैं। ये आपका पेल्विस डिस्ट्रैक्शन। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट।
ये आपका सैक्रल मेडिटेशन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये भी आपका थोड़ा सा एक फैसिटल जॉइंट डिस्ट्रैक्शन के लिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अभी हम ये रिलीज कर रहे हैं जो स्ट्रक्चर्स आपका नी जॉइंट के अराउंड जो है। सो ये बहुत जरूरी है, ये एरेक्टर मसल रिलीज करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर स्टिफ हो जाती हैं, तभी इसमें आपका स्टिफनेस काफी रहता है, वेरिएशंस फॉर्म हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से। जो मिडिल साइड है वो सबसे ज्यादा जॉइंट्स पे रिड्यूस हो जाता है। तो एक्चुअली सबका ही मीडियल साइड से ही शुरू होता है। जितना दूर चल सकती हूँ, जैसे कि जितना अभी शुरुआत में तो आप धीरे धीरे थोड़ा चलिए, जहाँ पे आप लग रहा है आप थक जा रहे हैं वहां से स्टॉप कीजिए, रेस्ट लीजिए, फिर धीरे 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 आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ये सैक्रम ना लंबोसैक्रल जंक्शन में भी थोड़ा सा पेन आप बता रही थी, यही है ना। हाँ। लगता है इस पैर करके सो रहा क्या। तो ये ग्लूटियस है ना, मीडियस मसल में थोड़ा सबको पेन है। वो पैर की वजह से सारे जो है ना मिसअलाइनमेंट की वजह से सारे सब धीरे धीरे एक साइड में ऊपर टेंशन हो जाता है। प्रॉपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लाइन ऑफ ग्रेविटी जब मेंटेन नहीं हो पाता है, तब धीरे धीरे इसका ऊपर क्या हुआ है, अपर स्ट्रक्चर्स एंड लोअर स्ट्रक्चर्स ऊपर सारे बायोमेकेनिक्स चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या है, मसल के ऊपर टेंशन हो जाती है, तो फिर पेन चालू हो जाता है। थोड़ा सा हम रिलीज कर दे रहे हैं पैरास्पाइनल मसल सबको स्पाइन का। तो सर टैपिंग कर रहे हैं ये, ठीक है। ये मसल्स जो टाइट है, ये पूरा हैमस्ट्रिंग मसल जो है मीडियल और लैटरल, ये सारे स्टिफ है, इसके वजह से आपका नी का ऊपर और तरह जो मोबिलिटी है वो लेस है। तो इसको थोड़ा टैपिंग से ये मसल थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। कफ मसल भी टाइट है। कंफर्टेबल है ना? एनी डिस्कम्फर्ट लेट मी नो। नी जॉइंट हम एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है।
थोड़ा स्पाइन का कर रहे हैं. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. ये सैक्रम वाइब्रेशन कर रहे हैं आपको. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Okay. Relax. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Yeah, very good. तो आपका नी जॉइंट मोबिलाइज करते हैं. Breathe in, breathe out. Relax. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Okay. Put on. जॉइंट के लिए कर रहे हैं हम एडजस्ट. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Yes. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Okay, relax. Breathe out. Yeah. Breathe in, breathe out. Okay. छोड़ी. हाँ, relax. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Yes, very good. आप उल्टा लेट जाइए. ऑन सिटिंग पोजीशन में थोड़ा आपका एरेक्टर्स मसल थोड़ा रिलीज कर रहे हैं.
और जितना स्ट्रक्चर्स है अराउंड नी जॉइंट दैट आई एम रिलीजिंग. हम 14 के बाद जाएंगे जूता लेने के लिए, क्योंकि अभी हमको निकलना नहीं बात. 20 तो मेरी बेटी का एग्जाम है. ठीक है. 14 को लास्ट पेपर है, तो उसको तो 15 को 15 अगस्त को तो उसी भी करेंगे. ठीक है. ये वाला पैर दिखाइए. विटामिन डी टेस्ट कराएंगे. हाँ, विटामिन डी भी टेस्ट करा लीजिए. उससे भी होता है सब कुछ. विटामिन डी से कम होने से ना जॉइंट पे पेन ज्यादा रहता है, फिर धीरे हड्डी भी कमजोर हो जाती है. तो इसको हम ये हैमस्ट्रिंग पैरेक्टस मसल जो है ये जॉइंट का, ये इसमें थोड़ा रिलीज कर दिए. Breathe in, breathe out. Okay, very good. Breathe in, breathe out. पैर सीधा कीजिए. कैसा लग रहा है बताइए. मेरा को अभी फ्री लग रहा है. वैसे मूवमेंट में अभी कोई दर्द नहीं है वगैरह. कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका स्टिफनेस है. नहीं. आराम से आप पैर उठा पा रहे हैं. हम्म. वेरी गुड. ठीक है. फिर से मेरा लेट वैसे जाइए. कोई वो